Good morning friends, thank you for joining me today. So before we start, let me first tell you something about myself and this amazing platform of Unacademy. So my name is Sumit Soni and I am a professionally qualified chartered accountant. I have completed my certificate course on concurrent audit of banks and presently I am pursuing diploma in statutory audits, that is DISA, and I am also pursuing certificate course on IndAS conducted by Institute of Chartered Accountants of India. I have been teaching to CA, CS and CMA students from past 9 years, and I have also conducted classes at Nagpur branch of Institute of Chartered Accountants of India. So why I have chosen Unacademy? Friends, I am of the view that online coaching is far more advantageous than offline coaching. There are many advantages which will definitely list now, but with Unacademy they will give you some more advantages which definitely will be very useful to you and it will help you score very handsome marks in your examination. So coming to the advantages, I have bifurcated in two categories: financial advantages and non-financial advantages. Coming to the financial advantages, like the biggest advantage is low fees. You know, coaching is a good business nowadays and this institute charges you enormous fees nowadays. So what you pay here is not even 50% of what you pay in your offline classes. Second advantage, besides saving in fees, you will save a lot of money in your transportation cost. Going to and fro from classes is not an easy task. It will save your money, petrol cost, as well as at least 40 to 45 minutes of your daytime if you will choose online classes over offline classes. This 45 minutes can be utilized in doing something more productive, something bringing out the artist in you, doing some extracurricular activity which will relax your mind, like joining guitar classes or dance classes, something like that, of anything of your interest. Again, you can pay fees here in installments, which sometimes the offline institutes don't allow you. The other advantages beside financial advantages is here you can select teacher as per your convenience. Nowadays what these coaching institutes do, they provide you with the package. Like if you join all the subjects, they will give you 20 to 25% discount, which is quite lucrative, and generally the students fall prey to these schemes. It's unlike that if you are not satisfied with your law classes, law teacher, law faculty, and you are quite happy with your statistics faculty, but with the package, you have no other options to join law class as well. In Academy, you have so many options. You can select different teachers, the best amongst India. You can select different teachers for different subjects. Another advantage is you can repeat here multiple times. Sometimes it happens that a student is hesitant in asking anything in class. If he has not understood anything thoroughly, he is hesitant, or the teachers might not repeat. Again, what this institute do, they charge you full fees for your regular classes, and again for revisionary classes they charge you as well. In Unacademy, you can repeat, revise your subject as many times as you want in your given period of time. So multiple revision, no tension of missing any classes, no tension of missing any concept. If you have to go for a family picnic, if you have to go to a relative's wedding, you can join it without any tension. You can enjoy it because you know you will make up with your missed classes. Again, some students are hesitant in asking questions in live classes. In Unacademy, you just have to type your queries and you will get your resolutions as soon as possible. So these are some advantages over offline. And again, in offline coaching centers, your teachers are quite globally centered. Here you can select any faculty from India, all over India, which you think is best for you. So there are so many advantages. You can also get discount if you will use the discount code or promo code given by me. So let's come to our topic. Topic for today is Accounting Standard 3, that is cash flow statement. This topic is very important with your exam point of view. Why? Because in IPCC Group 2, you have a separate chapter, cash flow statement and accounting standard as well. So the probability of asking questions from this topic is quite high. Again, there is a similar standard in AS-7. If you can see the board, there is a similar standard in AS-7, that is statement of cash flows. Now, what is in AS-7? IndAS means Indian Accounting Standards. Indian accounting standards are the future of accounting standards if I say in the plain vanilla language. See, Indian accounting standards are in line with the IFRS, that is International Financial Reporting Standards.
So Indian accounting standard is quite a global term in line with the global accepted standards. So India has not adopted IFRS completely. They have converged with IFRS, which means with minimum changes here and there in the IFRS, they have adopted it and made Indian accounting standards. It is numbered same as IFRS is numbered. So there is no tension in memorizing the numbers. And why IndAS, telling about IndAS is important. Again, the applicability of IndAS for present examination, for your present attempt is postponed. It may be postponed for 1 or 2 more examination, but sooner it will be mandatory for you. It will be applicable for your examination. So you must be aware of this concept as well. Applicability of IndAS, if I say about the applicability, IndAS is applicable to 1. Every company which is listed or in the process of being listed in India or outside India. See, about listed company, we are clear. And unlisted company only if its net worth is more than 250 crores. Right? So, for listed companies, net worth criteria is not there. Even if your turnover, if your net worth is ₹1, it will be applicable to you. It will be mandatory for you from financial year 16-17. And for unlisted company, only if, mandatory only if the turnover, the net worth is more than 250 crores. Voluntary, you can do so. The third category is the subsidiary, joint venture, associate, holding company of these two, listed companies and unlisted company having, for which these are mandatory. So again, for them also this will become mandatory. Right? So this was about IndAS. AS-3 is similar to what IndAS 7 tells you. Right? So let's go into AS-3. AS-3 is cash flow statement. First, let's understand what cash flow statement wants to teach us, wants to tell us. It is very simple. First is cash. What do we mean by cash? Cash is the hard currency notes only? No. Here, cash means cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. So, 2 parts. One is cash. Cash means cash in hand, definitely the currency notes, the cash in hand. And it includes demand deposits. And what is cash equivalent? I will tell you. See, I have said demand deposit, not fixed deposit. I'll come back into this after we'll do this. So cash equivalent means any asset of the company which is highly liquid. See, if you have to keep something at par with cash, cash is the most liquid asset of the company. So if you are putting anything at par with cash, so it must be highly liquid. Okay, so it must be highly liquid. Highly liquid means it is convertible into cash very easily in a short period of time. When I say short period of time, here it is defined that short period of time is generally a period lesser than 3 months. So anything which can be converted, other than cash, definitely I am telling, anything which can be converted into cash within a short period of time, that too in known amount. This is very important. Known amount. Like there are many things which can easily be converted into cash, but a significant risk of change in value, or there is a risk that the amount might not be known to you. So these kind of things, this kind of asset won't be classified into cash equivalents. What is important, you can convert it into known amount of cash. Third, as I said, there is an insignificant risk for change in its value. Like for example, equity share. Let us take example of equity shares. Is it highly liquid? Yes, nowadays it will take you 4 to 5 minutes to sell your equity shares in any stock exchange through your Demat account, and the money will be received in your bank immediately. It will take 4 to 5 minutes. But are you sure that you can convert into known amount?
yes sir, generally the prices are listed, we can convert it into known amount, but is there insignificant risk of change in its value? Like, are you sure if a share is listed for rupees 50 today, it will have no change in its value or very minimum change? Are you sure? Can you surely say that? Very minimum change tomorrow, and you know the amount that will be converted, that will be received tomorrow? No. So for equity shares, for mutual funds, there are high risk, significant risk associated. So these kind, even though they are highly liquid, they can be converted into cash in a short period of time, they will not fall in classification of cash equivalents, right? So insignificant risk should be there. And again, the purpose is important. These investment must be held for the purpose of meeting the short-term commitments, for paying the creditors, for paying expenses, for meeting the short-term commitments of the entity. It may happen that entity had surplus fund, entity have purchased some short-term investments, but they have invested it for the purpose of investment only, not for the purpose of meeting the short-term commitment. So these kind of investment will be classified that as investment, not as a cash equivalent. So if we'll revise it, cash equivalents are any asset of the company which are highly liquid and can be converted in known amount of cash within a short period of time, that it must have insignificant risk of change in its value, and it must be held for the purpose of meeting the short-term commitments of the entity. Again, now let's come here. What is cash? Cash means cash in hand, and it includes demand deposits. I told you fixed deposit will not come here. Sir, why? Fixed deposits are highly liquid, right? It can be it can be easily encashable in the known amount, right? Definitely. There are insignificant risks associated with it. Yes, you know how much amount will you receive, and it's very unlikely that its value will change. You know the fixed amount what you will receive. Again, if the purpose, we assume that the purpose is for meeting the short-term commitments of the company. So fixed deposit may come here, right? Fixed deposit may come here, but assume that you have given your fixed deposit as a guarantee against your loan. Is it easily encashable? No, right? You have to first clear your loan, and then only you can encash this fixed deposit. So in this case, these kind of fixed deposit will not be termed as cash equivalent, will not be termed as demand deposit. What demand deposit is? Simply demand deposit, any amount, any investment with the financial institutions or bank which are easily encashable, right? Without any levy of penalty, right? Easily encashable without. So fixed deposit, if given as a guarantee against loan, is not easily encashable. So these kind of fixed deposit will not come here. So when we say about cash flow statement, not cash alone, it includes cash and cash equivalent. When we'll go into questions, we'll get more clarity on this topic. Flow. When we say about flow, cash flow, flow of what? Flow means inflows and outflows, money coming to your entity, inflows, and money going out of your entity means outflow. Inflow and outflow of what? Inflow and outflow of cash and cash equivalents means these inflow and outflow is categorized in three categories. First, operating activities. Second, investing activities. And third, financing activities. What do we mean by operating activities? Operating activities means the principal revenue producing activity of an entity. What is the principal revenue producing activity? Like for trading concerns, it's sale of goods, right? Sale of, so anything associated with sale of goods, purchase of goods, again, these are routine activities, trading activities, sorry.
paying the routine expenses, fixed office and administration expenses, variable overheads. So these are all operating activities. Investing activities means acquisition and disposal of your long term assets, right? जो ऐसे assets जो लंबे समय के लिए आपकी एंटरप्राइजेस के पास, आपकी एंटिटी के पास है, उसकी खरीदी, बिकवाली, डिस्पोजल यानी उसकी बिकवाली को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या आपने किसी को लॉन्ग टर्म लोन दिया है तो उस लॉन्ग टर्म लोन का देना और उस लॉन्ग टर्म लोन का वापस मिलना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस चेंज इन इक्विटी, शेयर्स नहीं बोला है, चेंज इन इक्विटी यानी ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड एंड द लॉन्ग टर्म बोरोइंग का चेंज होना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ओनर्स के फंड का चेंज होना जो होता है वो होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट? सो अगर मैं इसको नटशेल में समझाने के लिए, ऐसी बैलेंस शीट्स और ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनता है कंपनी का, आपको पता है, ठीक है? वो वर्टिकल बैलेंस शीट्स बनती है, फॉर्मेट में बनता है, ठीक है, भूल जाओ उसको, ठीक है? अगर आपको समझाने के लिए बोलूं तो एक कंपनी की बैलेंस शीट में जनरली क्या होता है? मैं फिक्स असेट्स नहीं लिख रहा हूं, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स लिख रहा हूं, क्योंकि ये रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 की वजह से। यूजुअली आपका क्या होता है? फिक्स असेट्स या प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स, देन यहां होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स, डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है। देन होते हैं आपके करंट असेट्स, जिसमें आपका आ गया स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, कैश, बैंक, राइट? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आ गए आपके। यहां पर क्या होता है आपका? भाई इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड लिख दूं, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आ गया। देन आपका आएगा डिबेंचर्स, देन आपके अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देन आपकी करंट लाइबिलिटीज, जिसमें आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो परचेजेस से क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीपी, देन यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, देन आपका आएगा नेट प्रॉफिट। इन सिंपल वर्ड्स में बात करूं ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म असेट्स, राइट? करंट असेट्स शॉर्ट टर्म होते हैं, वी नो। लॉन्ग टर्म असेट्स का एक्विजिशन और डिस्पोजल, सो इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो हो जाएगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शेयर होल्डर्स फंड, इसमें कुछ चेंजेस होना, इसको हम बोलेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट? और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज है, ठीक है, जो बच गया बैलेंस शीट में, ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक स्टार लगाया है, क्योंकि पीएनएल में कुछ चीजें ऐसी है जो डायरेक्टली, जैसे टैक्सेस का प्रोविजन, इंटरेस्ट, जो डायरेक्टली इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आप लिंक कर सकते हो, तो वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में जाएगा। अदरवाइज जो बच गया वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमने क्या किया, एकदम सिंपल तरीके से समझ लिया
कि बैलेंस शीट और पीएनएल के आइटम्स में कौन सी चीज इन्वेस्टिंग है, कौन सी चीज से रिलेशन अगर रखे तो हम फाइनेंसिंग है, और कौन सी चीज ऑपरेटिंग है। बहुत सिंपल टर्म्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको और ये सिंपल लगने वाला है, राइट। तो मैंने आपको बताया है कि कैश फ्लो, हमने कैश और फ्लो का मतलब देखा। फ्लो यानी इनफ्लो और आउटफ्लोज, आउटफ्लोज का इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वो क्या होती है वो हमने देखा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट का। तो यहां जो कैश इन बैंक है ना, वो ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, क्योंकि हमको उसी का तो स्टेटमेंट बनाना है, उसी का तो रिकंसिलिएशन देना है कि बुक्स में जितना कैश दिख रहा था सब एक्टिविटीज से मिला के जो नेट चेंज हुआ कैश में, वो बुक्स के ओपनिंग और उसमें ऐड या लेस कर दो तो वो क्लोजिंग से मैच होता है या नहीं होता, राइट। फाइन। अब ये स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, तो यहां पे आप जो भी लिखते हो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉर्म में, स्टेटमेंट यानी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया स्टेटमेंट है। किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। कौन होते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ये इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इनके लिए स्टेटमेंट क्यों बनाना है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्या है, राइट। तो डेफिनेटली यू नो दिस इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट आर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैं पूछूंगा तो फटाक से आंसर आएगा, सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटीग्रल पार्ट है, क्यों, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जाता है हर जगह, हर यूजर इससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। तो क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, क्या जरूरत है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, क्या बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी अपने लिक्विड एसेट्स को, कैश को कैसे मैनेज कर रही है। क्या कंपनी, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं बट लिक्विडिटी क्रंच आने के कारण वो बंद हो जाते हैं, राइट। फाइन। तो लिक्विड, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट हमारे नागपुर में एक फेमस केस था जिन्होंने ऐसी स्कीम निकाली थी कि आप आज 10,000 रुपए दो, 4 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, या 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इनिशियली लोगों को ये काफी बेनिफिट हुआ इन चीजों से, लोगों को पहले पैसे डबल होते हुए मिले, पर जब बहुत ज्यादा फंड्स जमा हो गए इनके पास तो क्या हुआ, ये लोगों के पैसे नहीं दे पाए, फ्रॉड घोषित हो गया और ये बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया, राइट। बट क्या ये एक्चुअली फ्रॉड था, ठीक है। तो क्या स्कीम थी इनकी, ये लोगों से पैसा लेते थे, इसको रोड से जो टच होती हुई प्रॉपर्टीज है ना, जो लैंड जो होते हैं, जो रोड को टच होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। जिसके पैसे, जब नागपुर बूम था 2007-8 में, उस समय पैसे बहुत स्पीडीली डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स हो जाते थे, लोगों के पैसे डबल दे देते थे, खुद का प्रॉफिट रख लेते थे। तो क्या हुआ, इन्होंने जोश में आके रोड टच प्रॉपर्टी के साथ साथ और पीछे की प्रॉपर्टीज लेना भी शुरू कर दिया। रोड प्रॉपर्टीज तो बिकने लगी, बट जो पीछे की प्रॉपर्टीज थी उसका मार्केट उठा नहीं। इसके वजह से इनके कंपनी के पास असेट्स तो बहुत थे, डेफिनेटली लायबिलिटी से ज्यादा असेट्स थे, तो कंपनी सॉल्वेंट तो थी, बट कैश नहीं था लोगों को देने के लिए। लोग कंपनी पे चढ़ गए, लोगों को लगा फ्रॉड हो गया, राइट, और प्रॉब्लम हो गई, कंपनी का दिवाला निकल गया। तो लिक्विडिटी, कैश का होना, लिक्विडिटी कंपनी का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी के सर्वाइवल के लिए। तो इन्वेस्टर्स ये देखेगा कि कंपनी अपने कैश को कैसे मैनेज कर रही है, क्या कंपनी एफिशिएंट है, मैनेजमेंट एफिशिएंट है, क्या कंपनी इतना कैश जनरेट कर सकती है कि अपने क्रेडिटर्स को पे कर सके। एंड अगेन क्रेडिटर भी ये इंफॉर्मेशन देखेगा कि क्या कंपनी खुद की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना कैश निकाल सकती है कि जो हमको हमारे पैसे वापस टाइमली मिल सके। क्रेडिटर्स मीन सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स नहीं, डिबेंचर होल्डर्स आर ऑल्सो योर क्रेडिटर्स, जिनसे आपने लोन लिया है बैंक्स, दे आर ऑल्सो योर क्रेडिटर्स। तो वो ये इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इस नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड दिए गए। अच्छा चलो, एक इसके पहले, मेथड के पहले हम देखते हैं कि
कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक यूजर डिसीजन ले सकता है, मैं आपको बना के बताता हूं। सपोज कंपनी का कैश इनफ्लो है, राइट, कंपनी ने कैश जनरेट किया है अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ठीक है। मैं कैश की बात कर, हो सकता है नेट प्रॉफिट 100 रुपए हो बट कंपनी ने कैश 300 रुपए जनरेट किया हो। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट डेप्रिसिएशन के बाद आएगा और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। तो 100 रुपए नेट प्रॉफिट है, अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं तो प्रॉफिट 300 होता है, यानी कैश 300। सिर्फ एक एग्जांपल है, ओके। तो कैश हो सकता है ज्यादा हो, तो नेट प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट को आप मिक्स मत करिएगा। कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट किया है 100